understand what do you mean by acute disease. If we are clear enough regarding the concept of acute disease, then our selection of remedy and our evaluation of symptom, and even before that, our case taking will be motivated by that. And again, in this part, I would like to say once again that I have told you earlier in many classes that here begin with the end in mind is very important. Begin with the end in mind. If it is not there, then your case taking will be troublesome, especially for the patient. In homeopathic regular practice, we have found that, especially I have seen in my early age, especially when I was in Calcutta, that I have observed few physicians who are skilled in taking acute cases only and mostly, and their clinic is full of acute cases. And many other authors, many other prescribers, well-known prescribers are those who have mostly chronic cases. So one gets expertise and the similar way of patients flow is in their clinic. Another has a different type of expertise and a different flow of type of patient flowing in their clinic. It is not so, okay, he has given any type of outlook, I will see only acute cases, or one will say only chronic cases. But a different pattern tends towards that. And here I would like to say that this expertization, either for acute practice or for chronic practice, from the very beginning, although homeopathy is one, philosophy is one, principles are one, but applications have a different pattern of a skill and mindset. Here, mindset is very important. Just to understand, I would like to say you must have seen so many cricketers, but how you think Rahul Dravid is, what is his quality of cricketing? And just I would like to say, what is the cricketing quality of Virender Sehwag? No doubt, both are well known and well respected and highly achieved cricketers. But those who are well experienced, you can say, or very famous, especially for the test cricket, and one who is highly achievable in one-day cricket, they all know everything about the cricket. But one is performing very good in test, one is performing very good in one day. And even nowadays, 2020 is the most different form. Even as compared to the one day, 2020 has a different set of mind. And similarly, अगर आप इस चीज को देखो, इसके पैटर्न को, इनके माइंडसेट को देखो, इसका मतलब ये नहीं कि one is having lack in any part of cricketing knowledge, but their mindset, their reflex is moving towards different thing, and one's reflect is moving towards different thing. Playing a test cricket needs a lot of patience. With all the quality of skill of batting, bowling, etc., lot of patience is there. And you cannot afford to lose patience in test cricket. As well as in 2020, you must have a hurried mindset.
if you are not having a hurried mindset, even if you just wasted 1 or 2 over, your team have to pay the price. So from the very beginning, from the very first ball, you have to be in a hurried mindset. Similarly, in case taking, in prescribing, for acute cases and for chronic cases, your mindset should be like that way. In chronic diseases, if you are in a hurried mindset, then there is chances that you will destroy your case. In dealing with acute cases, if you are in a relaxed patient's way, then your patient will suffer unwanted. Your patient may suffer unduly. So both mindset is required if you are going for this, if you are practicing for the both type of cases. You must have to be in the both state of mind during prescribing, during case taking. Dr. Blackie, Margaret Blackie, once quote with reference to James Tyler Kent, and she says that in homeopathic clinic, almost all type of acute diseases can be treated very successfully with shortest possible time. It is not that if you have cold and cough and it will take 7 days. And if someone says that homeopathy acts very slowly, then treating acute disease is the best example to show them the speed of homeopathy. Because in chronic case, you will not be able to justify because their mindset is very different form. कि आप साल भर लग गया तो आप उसको वो नहीं मानेगा. वो चीजों को he will not appreciate कि अगर even if this disease has taken 1 year, then it was about to persist for the whole life. And as compared to the whole life, 1 year is very less. But people will not understand it. But something, if it is going to happen for 7 days or 8 days and you have treated in 2 days, now people will appreciate it. And that's why if you want to show the rapid cure of homeopathy, the speed of homeopathy, acute disease is the best place to provide to justify this. Now, if we have such a thing, even for this, in case of if you study organon of medicine, then you must find that Hahnemann has also said regarding the repetition and justification of action of remedy, that in true acute diseases, a good conscientious physician can know from the very first, second, or third dose of his prescribing that whether his selection of a remedy is perfect one or there is need to change. The improvement of the selection of remedy mostly is observable within 1 or 2 days, or maximum you can say second or third day. It will not go beyond that. If it happens, then it is the need to introspect ourselves. Either we are lacking in part of Materia Medica, in part of philosophy, in part of perfect symptomatology. Most of the time, certain difficulty occurs that for acute cases, mostly either we have to observe, we have to see the patient from the eye of the attendant.
And this is one of the greatest drawback. Some family members come to us and they describe regarding the patient. Many important things we miss. Certain time patient call us even through video call, but there also we miss many things that was helpful for the prescribing. So for acute disease, especially, as far as possible, we should deal with the patient directly rather than with the help of attendant. You can use the information of the attendant along with that, but first we have to see the patient directly, and that is of greatest importance. Otherwise, we, even with good capacity of knowledge of Materia Medica and expertise of symptomatology, we are unable to get many important symptoms. So here, with my short clinical experience, I would like to suggest, especially for acute cases, first try to consult the patient directly. As far as possible, observe the patient, see the patient with your own eyes rather than the eyes and information of the attendant. This is very important. Now, for case taking, although there is one format, one direction for case taking, but even I would like to emphasize you, first just see aphorism number 82. If those who have organon of medicine can open this. And here Hahnemann has said regarding acute disease and chronic disease, and he's saying, I'm not discussing chronic here, he's saying case taking of acute disease is less time taken. Let's begin from here. Person is ill, disease is severe. In spite of that, Hahnemann is saying here acute diseases, case taking is less time taken. Hahnemann has never said that these are things that are not required in this acute case taking. He has not said so. Before you study this aphorism number 82, I would like to say you aphorism number 99. एक बार निकालो जिसके पास किताबें हैं. Yes. एक बार 99 को कोई रीड करो. On the whole, the investigation of acute diseases or of such as have existed but a short time is much the easiest for the physician, because all the phenomena and deviation from the health that has been but recently lost are still fresh in the एक मिनट रुक memory. जाना. Just take this sentence and put in your notebook for today. These are the some important tricks that I would like to discuss with you for your case taking, especially for any type of acute disease when you are going to deal with. ठीक है? Now read again. Yes, sir. On the whole, the investigation of acute diseases existed but a short time is much the easiest for the physician, because all the phenomena and deviation from the health that has been but recently lost are still fresh in the memory of the patient. Recently lost को under circle कर लो. Are still fresh in the memory of the patient and his friends, will continue to be novel and striking. The physician striking को circle कर लो. Striking.
The physician certainly requires to know everything in such cases also, but he has much less to inquire into. They are for the most part spontaneously detailed to him. This is the exact diplomatic quotation, but very practical. क्या कह रहा है? Physician needs to know everything, but very less is needed. Then what is needed? I just forget what is not needed, but first let's begin. What is needed? And if we just study these three aphorism, तीन aphorism अभी आपको हम बताएंगे. These three aphorism, and that will change your perspective of case taking for acute diseases. So here he has given you three important information. In aphorism number 99, 1, everything is required. That means you must be unbiased, open to take information from every area. You should not be prejudiced that I will not take from this area, from this area, or from this area. Everything is required. But second point, what he says, but very less is needed. And what is needed? What? That is more striking here. That is actually what is striking and recent. That is striking and recent. So if you add this aphorism, now just jump to aphorism number 6. क्या हुआ? खुला? Yes, sir. Now in aphorism number 6, note one thing. और वहां पे लिखा हुआ देखो, take note of nothing except the changes in the state of the health of the body and mind. ठीक है? Now thing is again clear. Here in this aphorism, I have started you from the, you can say, backward direction. ठीक? First note down aphorism number 99. और उसका भी सबसे लास्ट वाला सेंटेंस हमने आपको पहले बताया. वो क्या? सब चीज चाहिए. कोई सी चीज को पहले से बायस्ड वे में नहीं लेना है, ऐसा मत करो. उसके बाद अब पीछे बढ़ो थोड़ा सा, फिर क्या कह रहा है? जो स्ट्राइकिंग है. क्या कह रहा है? जो रिसेंट है. ये कैटेगरी एक लग गया. अब इस स्ट्राइकिंग और रिसेंट को दिमाग में रखते हुए एफोरिज्म नंबर 6 को आप कैटेगराइजेशन में आ जाओ. और 6 में क्या कह रहा है? इसको और स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गया. टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस in the state of health of the body and mind. That means from psychic plane, from corporeal plane, you have to note down, you have to collect the changes. और उस चेंजेस के लिए 99 को फिर देखो क्या बता दिया है, वहां एक कैटेगराइजेशन भी कर दिया है. चेंजेस रिसेंट है, वो रिसेंट वाला वर्ड इस एफोरिज्म नंबर 6 से मैच करेगा. बट उस रिसेंट में भी देखो एक चीज जिसको स्पेशली हिट करना है, जिसको स्पेशली ऑब्जर्व करना है, उस चीज को वहां पे बता दिया. क्या? स्ट्राइकिंग. एंड इफ you have completed these two aphorism, then you have to fix. ये जो स्ट्राइकिंग हो गया, चेंजेस नोट कर लिया, अब एक आपको क्या बोलते हैं ना, एक फ्लैग मार्क कर देना है कि बस यहाँ के अंदर
वो फ्लैग मार्किंग क्या है? योर एफरोजम नंबर 5, जस्ट फ्लैग मार्क. Most probable exciting cause. Most probable exciting cause. Mark from here the flag, because now from here till now, whatever the time patient has come to you till now, you have fixed the duration that all phenomena, that all morbid phenomena of during this period is actually going to help you. आप लोगों ने बहुत जगहों पे देखा होगा, जब कोई किसी पर्पस के लिए किसी हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, लाइक जब वो स्पेशली मार्केट प्लेसेस में निकल रहा हो या टांगे में गाड़ी पे जब निकल रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादातर देखो कि घोड़े के आंख के सामने एक क्या कुछ लगा होता है, जिससे सामने तो देखे बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन. एक स्पेशल एक डायरेक्टिव, जो भी एक प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है, जो यही प्रोटेक्शन भी जरूरी है ड्यूरिंग केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीजेस आपके लिए भी. और इसी प्रोटेक्शन के लिए हमने कहा है कि पहला प्रोटेक्शन जो एक लेफ्ट साइड में लगाइएगा, वो एक फ्लैग है. वो कौन सा फ्लैग? दैट बिगिंस फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज. इवन बेटर टू से particulars of most probable exciting cause, and not to say just exciting cause. If you say just exciting cause, then it is very misleading. So this exciting cause is always with probability, and that probability must be with its particular specifications. That is called most minutest touch in the fixing of your exciting cause. So just to sum up this, अब आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं. अभी तक तो पीछे से आगे आए थे, अब आगे से पीछे की तरफ जाएंगे. To sum up this, start your observation, start your collection, start your filling of your proforma, your pages, your prescription with the particulars of most probable exciting cause. First, take care of what is striking. Rest afterwards. First, take care of what is striking. That means if it is striking, that means it is intense. If it is intense, patient will not wait for you to ask. Patient will not wait for you when you will ask, then he will describe. If after your asking, if patient is describing this, then the striking is very doubtful. Then it is actually not a striking. It is a striking, then patient will just involuntarily describe you. Patient will instantly describe you. Patient will emphasize and describe you. So first mark this. And actually this is the way to categorize your symptom, to categorize your further next plan. So collect first what is striking. Then after, take what others is there that have changed.
इस अदर्स के अंदर जो एक्चुअली आ जाता है वो एक्चुअली हम कहते हैं जिसको क्या एनी पार्ट ऑफ एसोसिएशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है उसको अभी बहुत सीवियर स्नीजिंग और सर में दर्द हो रहा है, सो फर्स्ट पेशेंट विल टेल यू आइदर बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत सर्दी हो रही है। बट व्हाट यू हैव नोटिस्ड कि जब से सर्दी हुई है, जब से वो हुई है, उसको ठंडे पानी का प्यास बहुत बढ़ गया है। पेशेंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि हमको बहुत ठंडा पानी पीने का भी दिल कर रहा है। व्हेन यू आर इंक्वायरिंग, now you will finding that with this situation he has increased thirst. Then go more specific, what type of water, whether it is warm water or cold water. So this is latter part of changes that will help you to decide whether you are going to prescribe phosphorus, brania or rustox. But first consideration should be that is actually the striking, and afterwards other changes is the associating compiling factor. और एक चीज फिर से बता रहे हैं यहाँ पे याद रखना, this is one of the uniqueness of a division or a difference between acute disease case taking and chronic disease case taking. In chronic disease case taking, this latter changes, this less disturbing changes are of greatest importance. भरोसा नहीं है तो एक बार एफरोजम 95 खोल के देख लो, भरोसा है फिर भी देख लो। In chronic diseases, the lesser accessory symptoms are of greatest importance, and this is called actually the concomitant way of prescribing. But in case of acute disease case taking, I would not say that these lesser symptoms are not important. Of course, they are important. But here Hahnemann says first emphasized on the striking one. That is, again, if you want to verify, then again open aphorism number 99 and see the sentence. ठीक है? Again, this striking, you can say, go for aphorism number 82 and see the chief complaint, and afterwards the sentence. Just एक बार read करो उसको. 82. In acute diseases, the chief symptoms strike us and become evident to the senses more quickly, and hence much less time is requisite for tracing the picture of the disease. ठीक है? The chief complaint strike us. Match with 99. 2 बार हनीमैन कह चुका. कौन सा? चीफ कंप्लेन. स्ट्राइकिंग, दैट मीन्स जो पेशेंट कंप्लेन लेके आया है वही पेशेंट बोल रहा है आपको एक्यूट डिजीज है, वही ट्रबल कर रहा है, वही निकाल के आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट? रिप्रेजेंटिंग कंप्लेन. And this is one of the very important difference that we should keep in mind during the case taking of these two different variety of cases for acute and for chronic, and give
due deserving place in your selection of remedy to these two variety of symptoms. And if you will follow his direction, along with your good knowledge of Materia Medica, then you can also, after a few years, you will be able to say that how much effective homeopathy is in acute diseases and how fast homeopathy treat, especially during two type of acute diseases. The only possibility is your smartness of case taking should be sufficient and your knowledge of Materia Medica should be equally sufficient. Then the third part, that is the result, is bound to happen as sufficient. So once again, particulars of most probable exciting cause with the presenting complaint, with the chief complaint, with the striking symptoms, then take the other changes. And all the other changes, just you have to see, just you have to observe. Then you have to ask. Here I have told you first you have to see, then I have told you ask. I have used this sequence intentionally because as a rule what we study, first the words of the patient is very important. Then the second source of symptom is the attendant. Then your observation, as you have studied on aphorism number 6 also. But here I told you observe, then ask. Case taking of acute disease is highly dependent on your observation. Many times recent changes on the patient himself, he is not able to see himself. He is not able to realize himself. बुखार लगा है, आंखें चढ़ी हुई है. आंखें चढ़ा हुआ समझते हो? अब बुखार लग रहा है, आंखें चढ़ी हुई है, पेशेंट आईना देख के थोड़ी आ रहा है आपके पास, आके बोलेगा. वो आके बोलेगा बुखार लगा हुआ है, उसकी आंखें चढ़ी हुई है, that you have to see. और अगर ये परसीव करना भूल गए तो जेल्सीमियम बैप्टिसिया जिंदगी में नहीं प्रिस्क्राइब कर पाओगे. बाकी चीजें तो बाद में आएगी. और अगर ये देखना सीख गए तो बाकी ज्यादा ना पेशेंट का टाइम खराब करना पड़ेगा ना आपको अपना टाइम खराब करना. I just want to told you here one of the very successful stalwart from West Bengal. I'm just now forgetting his name and apology for that. एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही नामी फिजिशियन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, and he went to treat a case of high fever for, I think he was suffering for 7 to 8 days, and that patient has used so many other physician, other medicines, other pathy also, and he was in a very painful condition of high fever. That physician went to his room and just he walked back, and from the clinic he sent one medicine, and within 2 days patient was better. What he prescribed, you know, केस सुना होगा आपने कभी वेबिनार में. Bacteria दिया था. क्या? Bacteria was prescribed, which is what Very good. It was bacteria. He prescribed bacteria. Offensiveness की वजह से. तो अगर एक बार आप इस ऑफेंसिवनेस को पहचान लोगे तो फिर जिंदगी भर बैप्टीशिया नहीं भूलोगे. And the key feature of bacteria
उसके स्मेल और उसके चेहरे से ही आधा बैप्टीशिया एक्यूट डिजीज में प्रिस्क्राइब होता है, सिर्फ चेहरा और स्मेल। और जिस दिन दोनों मिल जाए उस दिन तो फिर सोच लो, बात खत्म। Even in acute diseases, it is of so great importance. That is why I am telling you, slight deviation, you can say, or you can say slight upliftment of pattern of case taking that differs from a routine exact directives of case taking of chronic diseases. Even if those who have Materia Medica Pura go and read volume 1, the introductory pages, preamble pages, and afterwards you will find there, बाद में खोज लेना, वहां पे आपको लिखा होगा, हनीमैन ने लिखा है, देखना अंडर ब्रैकेट में करके, those diseases of non-miasmatic, here there is no fixed format for case taking. क्या कह रहा है? Diseases of non-miasmatic, वर्ड मिलेगा तो पढ़ के बताना अंकुर। नॉन मैजमेटिक कहने का मतलब ही वहां पे कह रहा है एक्यूट और क्रोनिक को डिफरेंशिएट कर रहा है। और हनीमैन क्या कह रहे हैं? Those of non-miasmatic diseases do not have fixed case-taking format. That means for chronic diseases, what a routine, a rule, a description is described. In case-taking, it is not so that you have to go only through this route. And especially for the case-taking of acute diseases, I would like to say you one of the Chanakya quotation, Sham, Dam, Dand, Bhed, whatever you can use, whatever is suitable, utilize this and get the success. मिला अंकुर? देख रहा हूँ। uh, 20 page number, for example. Every case of non-myelotic disease is peculiar and special, and it is the special in it that distinguish it from every other case that pertain to it alone, but that cannot serve as a model for treatment of other cases. ये काफी बड़ा पैराग्राफ में दे हाँ, रखे। तो बस उसी पैराग्राफ को पढ़ लेना, जो बताया है वही कोर है। कहने का मतलब है, in acute disease, even Hahnemann suggests there is no fixed format, there is no fixed direction, there is no fixity of going through this way only. As in case of chronic diseases, you have to follow the protocol very perfectly. But in acute diseases, it is lot of diversity is there. In acute disease, you have to pick up smartly. जस्ट एक छोटा सा अदर वे में फिर से थोड़ा सा आपको बाहर से ले जाते हैं। अगर टेस्ट मैच चल रहा हो और ऑफ स्टंप से बाहर का बॉल जा रहा हो और कोई बैट्समैन उसको ज्यादा से ज्यादा हिट कर रहा हो 6 और 4 के लिए, और अगले मैच में सिलेक्टर सोचेगा कि उसको अगले टेस्ट में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, लेकिन अगर वही 2020 हो और कोई कह रहा है तो उसको अगले मैच में जरूर रखेगा सिलेक्टर, बिकॉज इन 2020 each ball what you have scored is very important, but in test match how you have scored is very important. Whether you have followed the discipline of scoring is very important.
और इसी डिफरेंस को एक बार और आप चाहें तो एफ्रिज्म नंबर खोलो, वहां पे एक जगह देखो 91 92, अनदर वेरी गुड aphorism that differentiate you between the case taking for acute and chronic disease. 91 92, अब 91 में जो लिखा हुआ है that is for chronic case, 92 में जो लिखा हुआ है that is for acute and rapid case. देखो उसमें एक वर्ड लिखा होगा conjoint malady. जी सर। ये भी जो दो लोग अभी ऑर्गेनन को इस तरह से नहीं पढ़े हैं, वो अभी इस पार्ट में जो अभी ऑर्गेनन का लिखा रहता है एफ्रिज्म, वहां पे ऐड कर लेना कंजॉइंट मैलेडी. दिस इज अगेन सारा डिसिप्लिन हनीमैन जो एफ्रिज्म देखो 91 में भी जिसको एम्फेसाइज किया, उसको भी नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी, बिकॉज यहां आपको जल्दी से जल्दी इफेक्ट देना है. सो इवन इफ यू हैव टू violate some slight things to save your patient, and even if this demarcation is very different to identify, to separate, to segregate the different varieties of symptoms, do not waste time to segregate this, rather utilize this time to save the patient's suffering. And so not with pleasure but with anguish, Hahnemann has said here, utilize conjoint malady. Take your case selection of your remedy on the basis of conjoint malady. It is not the word that is said with pleasure, rather it is the word said with anguishness, with pain, with discomfort. But this is the possibility of possible way that you have to go. So once again, what I would like to say, importance of symptoms, that your observation is very, very, very important. One of the book, Boger Synaptic Keynote, when I was in second, third year, Dr. L.M. Khan sir has told us once to study this book with just one direction. Many times Ankur and many other students asked me, sir, why you have just one book of so many copy? And that I have started from that place only. That sir usually told us to study one style in one book, in different style in different book. So I would like to here say you one thing, that in those whole Boger Synaptic keynotes are told us, just mark, underline the symptoms which is objective, the symptom which you will see in patient, you will observe in your patient. Just mark all the symptoms from this Boger Synaptic keynote from every medicine, and mark them, that when you will open this Materia Medica, all the objective symptom will come to you, and that will help you in a much, much better way when you are going to have such type of prescribing. No doubt those symptoms are valid for chronic diseases also, but for acute diseases, what I mean to say here by this, no doubt you have observed the patient, but if you are not aware of the symptoms in the Materia Medica against this observation, then these observations are useless. If you have observed the patient की आंखें चढ़ी चढ़ी है, अब आपको पता नहीं कि मेट्रिया में किस में है, ये बुखार होता है तो आंख तो सबका लाल हो जाता है,
बट वो आंखें लाल होना और आंखें चढ़ी चढ़ी होना, इस ऑब्जर्वेशंस का अगर हमको काउंटर पार्ट नहीं पता है तो उस ऑब्जर्वेशन का क्या वैल्यू। उस फीवर का केस है और पेशेंट जब लेटता है तो लाल होता है, जब बैठता है तो उसके अंदर एक एनेमिक स्टेट डेवलप होने लगता है, जैसे लगता है कि उसके चेहरे में खून, बदन में खून नहीं है। देख तो लिया, अगर मेटेरिया में रेमेडी पता नहीं है तो फिर क्या फायदा। और इसको अगर हमने देख लिया और फॉल्स प्लेथोरा समझ के फेरामेट में चले गए तो ऐसा ऑब्जर्वेशन का क्या फायदा। फिर हमको समझना पड़ेगा ना कि ये फेरामेट है या ये एकोनाइट है। फेरामेट में फॉल्स प्लेथोरा ऐसे ही होता है। सो सिम्टम्स of observation is also very important to know from your materia medica part, and now it is of highly important to know, to observe in your patient too. So with these, what we here need to understand during case taking is all these discussions that I have told you. I'm not going to repeat more and more because it will take time. Then I would suggest you few precautions that you should need. Among them, first precaution that what I have told you, ये जो horse के सामने एक protection लगाने का, that is very nicely discussed in Kent's philosophy. Kent philosophy में जो case taking दिया हुआ है examination of patient, उसका fourth chapter मतलब sequence वाला fourth नहीं, examination of patient का fourth chapter, और उसका पहला पैराग्राफ लास्ट किसी क्लास में बताया भी था, किसी ने पढ़ा भी था उसको, एक बार फिर से अभी उसको शॉर्ट में जस्ट रीड कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन। It is important to avoid getting confused by two disease images that may exist in the body at the same time. जी, A इसको chronic इंपॉर्टेंट को भी सर्कल कर लेना और अवॉइड को भी, ताकि पता हो कि क्या करना है। ये जो हम पहले पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और क्या है, अवॉइड करना है। A chronic patient, for instance, may be suffering from an acute disease, and the physician, on being called, may think that it is necessary to take this totality of the symptoms. But if he should do that in an acute disease, missing both chronic and acute symptoms together, he will become confused and will not find the right remedy. यही था जो बताया था, हॉर्स का प्रोटेक्शन, जो साइट नजरें भटके नहीं। वन ऑफ द strict discipline of your sight, of your eye, it is a part of, ये वही चीज है जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि उस पक्षी के आंख में निशाना लगा रहा है, आपको क्या दिख रहा है। तो अगर वो महाभारत का वो वाला पार्ट एक बार देखोगे, सुनोगे, या टीवी में भी मिलता है, यूट्यूब पे देख लेना कि बाकी सारे पांडव को क्या दिख रहा था और अर्जुन को क्या दिख रहा था, और तभी अर्जुन अर्जुन बना। था तो सब कुछ सबके लिए। Your concentration, you must know that where you have to concentrate. If you are not knowing where you have to concentrate, then this is the one mistake. And if you know everything and if you are not able to concentrate, then this is the second mistake. So first you should know where to see, where to concentrate, and then you have to concentrate. Then both are required. कभी ऐसे मौका मिले तो देखना, बहुत सारे जगहों पे
जब वो डिस्कवरी चैनल पे या वो जो एनिमल वाले चैनल पे आपको मिलेगा, बाज समंदर के ऊपर उड़ रहा होता है, उड़ते उड़ते एक बार बहुत एक डीप डाइव लेता है और उस समंदर से एक बड़ी सी मछली पंजे में लिया और लेके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट कंसंट्रेशन। कहाँ हो, कहाँ देख रहे हो, क्या डाइव करना है, पिक करना है और निकल जाना है। When you have achieved this smartness in your case taking, no one is going to fail you in your success for your acute diseases prescribing. And this is of great importance during case taking of acute diseases. Even if यही वाली चीज एक बार और आपको अगर देखना हो तो केंट्स के मटेरिया मेडिका में एलियम सेपा चैप्टर पढ़ के देखना, जहां उसने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। First, treat the acute condition of the hay fever. When this hay fever subsides, then prescribe antisoric or constitutional medicine. That means, again, you have to separate the symptoms. Patient तो वही है, सोरिक केस टेकिंग करने के लिए, एंटी मैजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी उस टाइम में था, बट जब आप हे फीवर एक्यूट फेस ट्रीट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सेपरेट करना है, क्या लेना है लिखा हुआ? सेकेंड पेज पे होगा, सेकेंड थर्ड पेज पे। Yes. Or only an explosion of chronic disease, that is, it is a manifestation of SORA and be eradicated only by antisoric treatment. और आगे? Many a times have I seen hay fever wiped in season by a acting remedy, only to return the just the same, and perhaps another remedy will be required. As soon as the hay fever is stopped, you must begin with constitutional treatment. ठीक है, as soon as the hay fever stop, मतलब इसको एक अदर वे में समझने की कोशिश करो। That means as soon as the hay fever persists, your selection of remedy should be different way. That means your case taking, your collection of symptoms of different nature. Patient वही है, hay fever subside कर गया. Now your collection of symptom, your way of case taking should be in a different way. And what is that different way? That is what we are discussing here since last 1 hour. That is most important aspect of, just I have tried to give you one of the shortest expression of case taking and concised and shortest way of case taking for acute diseases. Now for this, after this, ये वाला जो पार्ट है ना, अभी केस टेकिंग का जब भी या जिस सेक्शन में भी फर्दर करेंगे, ये कॉमन होगा सभी में, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो अलग अलग कुछ डिफरेंसेस, पिक्युलरिटी होगा, हम उसको फर्दर डिसाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आगे आगे। बट ये जो इतना बताया, दिस इज द मोस्ट कंसाइज्ड, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, ऐड करने के लिए भी बहुत है बट इसमें छोड़ नहीं सकते, ये इतना था। दीज इंफॉर्मेशंस आर इंडिस्पेंसिबल, इसको रखना ही रखना होगा, उसके ऐड करते चलेंगे फर्दर चीजों के, फर्दर डिफरेंशिएशंस में। सो अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल पार्ट पे। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, आप उसको लिख लेना।
इसका हम कुछ वो फोटो भेजेंगे, अंकुर अगले बार अगर बना देगा तो हम फिर आपको भेज देंगे, दिखा भी देंगे। बट हम वो बना, अच्छा हाँ एक और चीज, अभी जो लास्ट वाला दो बता रहे थे, एक किताब आती है, एक्चुअली किताब का नाम हम भूल रहे हैं, जेरमी श्वाइन, नाम सुना होगा, जेरमी श्वाइन। इसकी एक किताब है होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग की, अगर मौका लगा याद दिलाना तो हम उसका पेजेस फोटो खींच के आपको भेज देंगे, जो चीज अभी कहने जा रहे हैं। उस जॉर्मी श्वाइन के केस किताब में एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले डिस्कशन में देख लेना, एक जगह प्रिस्क्राइबिंग के क्लू को बताने की कोशिश की है कि especially difference with the symptomatological prescribing and constitutional prescribing. जस्ट एक शॉर्ट में थोड़ा सा उसको हम बता रहे हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग एक्चुअली अभी इसको बहुत एक डिफरेंट एस्पेक्ट है करने का, कभी फिर मौका बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट एक पकड़ते हैं और एक सिम्टोमेटोलॉजी का एस्पेक्ट पकड़ते हैं। अब सपोज कर लो, जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो बहुत माइल्ड है, बहुत भावुक है, प्यास नहीं लगता, पानी नहीं पीता, तली हुई चीजें नहीं खाता, ठीक है, बड़े आराम से घर का पूरा दरवाजा खिड़की खोल के रखता है और इस तरह से रहता है। अब अचानक से उसको 2 दिन से फीवर हो गया। जब से फीवर हुआ है उसको ठंड लग रही है, रूम बंद करके रख रहा है, कोई बात करने आए तो बड़ा चिड़चिड़ा के जवाब दे रहा है, हर शिप में पानी पी रहा है, जल्दी जल्दी पानी चाहिए। अब बताओ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और उसका भी सिम्टोमेटोलॉजी दोनों ही बिल्कुल 180 डिग्री के डायरेक्शंस में जा रहा है। अगर ये क्रॉनिक केस का कंसिडरेशन होता तो वहां पे ये एक्यूट फेज का जो डेवलपमेंट है, जो सिम्टोमेटोलॉजी का डेवलपमेंट है, ये तो नहीं रहेगा। तो वहां पे एक्यूट सिम्टोमेटोलॉजी में जो भी सिम्टोमेटोलॉजी हो, उसमें अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को पकड़ रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो समहाउ वहां तो चल जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। बट इस कंडीशन में ये तो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में है। उसको बहुत अच्छे से उस चैप्टर में उस 1-2 पेज में समझाया है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक्यूट केस टेकिंग में हम इस डायरेक्शन पे जो अभी हमने आपको बताया विद द रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, इफ यू विल गो विथ दिस, then whether patient is going in the same direction or in the opposite directions, patient symptomatology, you don't have to worry. इसी में देखोगे एक और वही पेशेंट जो अभी पहला फीचर बताया, वही पेशेंट उसको बुखार लगता है। अब बुखार लगने के बाद वो और उदास हो जाता है और बिल्कुल बात बात पे रोने लगता है। हमेशा किसी को पास बैठा के उससे बातें करना, वो बीमारी के बारे में उसको समझाए तो उसको अच्छा लगता है, उसको बार बार कहता है हम ठीक तो हो जाएंगे ना, हम मर तो नहीं जाएंगे ना, हम तो ठीक हो जाएंगे ना, तो मेरे साथ रहोगे ना। वही पेशेंट जो पहले थोड़ा थोड़ा पानी पीता था, जब से बुखार लगा है और दिन भर में पानी नहीं पिया, दवाई के लिए जो पी लिया था पी लिया, नहीं तो नहीं पिया। वही पेशेंट बुखार से लगा हुआ है, लेकिन अगर खिड़की बंद कर दे रहा है कोई तो बोला नहीं नहीं दम घुट रहा है, खोल के रखो, चादर उड़ा दो बट खिड़की खोल के रखो। अब देखो ओरिजिनल सिचुएशन में जो सिम्टोमेटोलॉजी एक में बिल्कुल रिवर्स था, एक में सेम डायरेक्शन में और एग्जैगरेटेड हो गया। हेयर द अभी जो लेसेंट बताया, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट का रेमेडी दोगे तो यहाँ पे तो अच्छा काम कर जाएगा, दूसरे वाले में यही काम एग्रावेट कर सकता था। सो फिर वंस अगेन द डायरेक्शन जो इस कैटेगरी को अगर पढ़ के देखोगे तो चेंज चाहे इधर हुआ हो या चेंज उधर हुआ हो, आपको नुकसान किधर भी नहीं होगा अगर आप इस बात को पकड़ के पढ़ोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हनीमन्स डायरेक्शन।
or I would like to say this is the universal applicability of Hahnemann's direction for dealing with different type of natures of diseases. तो जिसको अगर ये वाली किताब मिले जेरमी श्वाइन की तो एक बार देख लेना, नहीं तो हमको याद दिलाओगे तो हम उसका फोटो भेज देंगे। ठीक है, ये एक दो चैप्टर, उसका ये वाला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अब इसके बाद इस ये प्रिकॉशन वाले में पार्ट में रखना, ये उस पार्ट के लिए था। अब आप अभी हम कंसीडर करते हैं एक्यूट डिजीज के, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और फ्लू वाले कंडीशंस को। हम सिर्फ अभी इसको एक आप केस टेकिंग में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट, अब ये जो बता दिया दिस इज कॉमन वन, अब इसके ऊपर हम अलग अलग वे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। इसको बताने से पहले एक बार फिर आपको हम कहेंगे, अभी वहां पे हम इतना टाइम नहीं है कि आपको डिस्कस करें, बट आपको सजेस्ट करेंगे यू मस्ट स्टडी एफोरिज्म नंबर 71, स्पेशली 72 to 75, एक बार अच्छे से पढ़ लेना 72 to 75। एंड नाउ जस्ट लिसन, वो पढ़ लेना, बाद में डाउट होगा तो हमसे बाद में पूछ लोगे। नाउ जस्ट लिसन one thing, that exact acute disease is what? The fundamental directions of diseases that Hahnemann has described, the true nature of diseases Hahnemann has described is of very different condition. Before you start the treatment of acute disease, you must know the Hahnemann's differentiations of different varieties of diseases. What does he mean when he says indisposition? What does he mean when he says exciting and causa occasionalis? Then what does he mean when he says regarding lifestyle conditions? I'm not saying iatrogenicity, वो तो chronic के अंदर ही आएगा, acute conditions में आ जाएगा। So just in short, अब इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे अब एक्चुअली फिर वो टाइम नहीं होगा बहुत कभी, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे एक बार आप हनीमैन का एफोरिज्म नंबर 135, 136 जो केस टेकिंग के रेफरेंस में दिया है, बट उसको पढ़ना और पढ़ लेना, बाद में अभी नहीं निकलवा रहे, उसको पढ़ के आप देखना वहां से एक चीज निकालने का है, और वो चीज क्या है, that Hahnemann has discussed in many times but with not perfectly designated terminology, जिसको बाद में कई सारे ऑथर्स ने कई सारे तरीके से लिखने की कोशिश की है, जिसमें से वन ऑथर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू रिगार्डिंग जॉर्ज विथॉल्कस लेवल ऑफ हेल्थ, एंड फॉर प्रिस्क्राइबिंग in success with success is philosophy ka, it is not a new philosophy, although Dr. George Vitholkas has given it with his contribution, but all these things you will find in Hahnemann's writing without emphasizing the terminology. Levels of health is very important to understand before you treat any chronic disease, and you will again understand how one chronic disease, even अभी आपके सामने देखो कितना लाइव एग्जांपल है, हम अभी अगर ये ओमिक्रॉन वाली वैरायटी को छोड़ दें, पहले वाले वैरायटी को भी छोड़ दें, बीच में जो डेल्टा वैरायटी आया था कितना विरुलेंट था, कितना ट्रबलसम था, इतना इन्फेक्शियस था, तो 100% सबको क्यों नहीं हो गया? एक ही घर में एक को हुआ, बाकी को क्यों नहीं हुआ? यही सेकेंड वाली वैरायटी अंकुर लोग यही था, हमको खुद हो गया, मेरे घर में मेरे गोद में मेरी बेटी कितने 2 साल की है, टेस्ट होके जब आया तब तो 3 दिन निकल चुका था, उसके पहले तो गोद में खेल रही थी। बाकी भी बाद में हमने सबका एंटीजन टेस्ट करा के देखा तो मेरे अलावा और किसी में आया ही नहीं एंटीजन टेस्ट, तो सबको क्यों नहीं हो गया? This is again
एक्यूट डिजीज अगर वाकई एक्यूट डिजीज है, देन द लेवल ऑफ हेल्थ मैटर्स। अगर ये मैटर नहीं कर रहा है तो एक्यूट डिजीज नहीं है वो, और अगर एक्यूट डिजीज है तो लेवल ऑफ हेल्थ मैटर्स। एंड दैट्स व्हाई आई एम्फेसाइज कि जो लोग जो भी इन द नेम ऑफ जीनस एपिडेमिकस और प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन XYZ कहते हैं, द बेस्ट प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन इज improve your level of health। चाहे वो इंप्रूवमेंट अच्छा डाइट से हो, योगा करके हो, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल से हो, और अगर वो सब आपने दरकिनार कर रखा है तो बाकी सारा प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन फिर वही रहेगा दिखाने के लिए। So different aspect of improving your level of health in a different way, each part is very important। हम फिर अदर डिस्कशंस में नहीं जाएंगे, भटक जाएंगे। हमारे यहाँ तो डाइट पैटर्न इतना यूनिफॉर्म हो गया है कि आज भी 2022 में बहुत सारे जगहों पे आप छोटे शहर में चले जाओ, आप अगर फ्रूट्स एक थैला लेके जा रहे हो घर पे, तो रास्ते में 2 लोग जरूर पूछेंगे घर में कोई बीमार है क्या। आज भी सोचो हमारे यहाँ जो भी कंडीशंस है जॉब का, XYZ वर्किंग का, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कितने लोग आइदर एक्सरसाइज, योगा या फिजिकल फिटनेस की तरफ रहते हैं। Does this don't matter? हनीमैन अपने क्रोनिक डिजीज में स्पेशली रिगार्डिंग द डाइट इतना अच्छा एक हिंट देके गया है, जिसको बाद में बहुत इलेबोरेट होने की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है प्रोफेशन में, स्पेशली हमारे BHMS या MD करिकुलम में। हमारे घर में अगर सपोज कर लो हम 7 लोग रहते हैं, तो क्या सातों का कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा है? क्या सातों का एज एक ही जैसा है? तो फिर सातों का डाइट एक ही क्यों है? सातों के लिए एक ही रोटी सब्जी क्यों बनती है? क्या सातों के शरीर को एक ही वैरायटी ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट है? बट हम तो रूटीन में बने हैं, चार जगह तो अलग अलग बनेगा नहीं सबके लिए। आज एक के पसंद का तो कल दूसरे के पसंद का, बहुत हद तक। बट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन नीड a different variety of food. Every constitution need a different variety of their occupation. उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम तो बस जी जान लगा के एक सरकारी नौकरी मिल जाए कम से कम, चाहे उसके लिए जो जाए जाती रहे। सो अब हम उस बात पे नहीं जाएंगे। सो मेनी थिंग्स आर देयर which are not appropriate to uplift our state of health, and this state of health, level of health is very dynamic. It varies from the early morning till the you are going to bed. सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपका जो एक स्टेट ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ हेल्थ रहेगा, दिन भर के एग्जॉशन के बाद जब रात को बिस्तर पे जा रहे होगे, आप एक ही लेवल ऑफ एनर्जी में नहीं होगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम आपको एब्नॉक्सियस एजेंट, आप चाहे उसको अल्फा बीटा डेल्टा गामा जो कह लो या एनी वैरायटी कह लो, हम इस कोविड की बात नहीं करेंगे, आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको उस एब्नॉक्सियस एजेंट, आपको उस इन्फ्लुएंसिंग प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज का सामना जब हो रहा है, उस टाइम आप कौन से स्टेट ऑफ लेवल पे हेल्थ पे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। सो योर understanding for happening of acute disease, you must understand with the levels of health, and this consideration is important for the treatment, for the prognosis of the patient, for the course of duration of the treatment, and for the management too।
आपको उसी के लिए उसी अकॉर्डिंग में आपको उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि सीवियरिटी ऑफ द डिजीज विल मैनिफेस्ट अकॉर्डिंगली। इन सारे बातों को कहने का मतलब निचोड़ में अगर हम कहें कि एक बात है, अब जो है सो है, जो मेंटेन हुआ सो हुआ, अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते जब आपके पास आया है, बट एक चीज जो करना है, सिर्फ दवा देके मत छोड़ देना। जब आप लेवल ऑफ हेल्थ असेस करने के काबिल हो तो उसको उसका प्रॉपर एडवाइस जरूर दोगे, एंड दैट एडवाइस इज रिलेटेड टू मॉडरेट वर्कआउट, एक्सरसाइज या रेस्ट जो भी है रिक्वायर्ड उस टाइम पे, प्रॉपर फूड जो भी रिक्वायर्ड है, एंड अवॉइड ऑल दोज स्ट्रेसिंग फैक्टर। सर्दी हो गई है, अक्सर देखा है कि रात को 2 दिन लगातार नेटफ्लिक्स का एक सीरीज पूरा खत्म करना है एक रात में, अगले रात में बुखार लग रहा है या सर्दी हो गई तो मौका मिल गया, छुट्टी है घर पे, नेटफ्लिक्स पूरा खत्म कर लीजिए, बीमार और पड़ेंगे। आपकी घर पे बैठे रहने से इसका मतलब नहीं कि आराम मिल जाता है, और स्ट्रेस का मतलब ही नहीं कि झगड़ा हुआ, कोई गुस्सा हुआ, कोई दिल टूट गया, कोई ये हो गया तभी स्ट्रेस आता है। इस स्ट्रेस को पढ़ने के लिए फिर एक किताब सजेस्ट करेंगे, आई थिंक अंकुर के पास है, स्ट्रेस ऑफ लाइफ बाय हैंसेले। हाँ, फोटो भेज देना सबको एक बार, पढ़ के देखना कितना। सांस लेते हैं वो भी हमारा एक स्ट्रेस फैक्टर है, लेकिन रोक तो नहीं सकते ना। उसने बोला है ना, ओनली द डेड हैव नो स्ट्रेस। हाँ, ओनली स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ही वही होता है, और एक्चुअली सब लोग स्ट्रेस फ्री होना चाहता है, बट जिस जगह पे स्ट्रेस फ्री होता है लोग वहां जाना कोई नहीं चाहेगा एक्चुअली, बिकॉज दैट इज नॉट द डिजायर्ड प्लेस फॉर एनीवन। खैर, दवाई के साथ आपको ये जज करना, दैट मीन्स ये जो केस टेकिंग करोगे, जो अभी फीचर बताया, इसके साथ आपको ये जज करना जरूरी है, बिकॉज ये आपके दवाई के सिलेक्शन के लिए भी यूजफुल है, अभी बताएंगे, और ये मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। और एक्यूट डिजीज में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप बहुत हद तक पेशेंट को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हो विथ योर मैनेजमेंट, और मेडिसिन साथ में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सो यू मस्ट असेस, इसके भी बहुत सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, फीचर हैं, कभी मौका मिला तो बताएंगे। सिंपल अभी आप इसको असेस करोगे, व्हाट एवर योर वे ऑफ असेसिंग गुड वाइटलिटी एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। सिर्फ कोई बहुत ज्यादा जिम करके डोले शोले बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छे स्टेट ऑफ हेल्थ में है, या कोई बहुत दुबला पतला है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खराब स्टेट ऑफ हेल्थ में। इस चीज को भी समझ लेना, ये डेजिग्नेटिव नहीं है अच्छे स्टेट ऑफ हेल्थ का, उसके लिए वाइटल पैरामीटर्स बहुत जरूरी है। सो अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स जो इस पार्ट में हमको नोट करना है। अब एक बार हम आप सभी को बोलेंगे, एक बार फिर से आप अपना नोटबुक खोल लीजिए सभी लोग, और ये जो